વિડીયોમાં ફરી એવો ઓર નવો વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. તો અત્યારે આપણે આવી ગયું ભવનાથ જુનાગઢ મહાશિવરાત્રી મસ્ત આયોજન કર્યું છે. તો તમને વિડીયોમાં બધું બતાવવાનું છે. વિડીયો સ્કીપ ન કરતા એન્ડ વિડીયોમાં મજા જ આવશે. કેટલું ડેકોરેશન મસ્ત કર્યું છે. મિની કુંભ જાહેર કર્યું છે 2026માં. કાંઈ નહીં, ચલો. जय श्री महाकाल, जय गिरनारी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक श्रद्धालुगण जो भी भगत देख रहे हैं उनको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं किन्नर अखाड़ा की तरफ से। और जो शाही स्नान जिसको बोलते हैं उसका महत्व देखो शब्दों में बयान करना पॉसिबल नहीं, शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार जब शिव पार्वती का विवाह हुआ था, जब वो गिरनार से गुजर रहे थे तो उनको कुंड में उनका एक वस्त्र गिर गया, ऐसा कहा जाता। और वो वस्त्र गिरने से वो जो कुंड है वो पवित्र हो गया, इतना पवित्र हो गया कि कहा जाता है जब कोई भी उसमें जो स्नान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, उसके सारे दुख दर्द सारे संकट दूर कर लेता है भोलेनाथ। तो ऐसा महत्व है। और शिवरात्रि तो बड़ा पर्व है और हम किन्नर अखाड़े में मौजूद है। इस पर किन्नर अखाड़े में बहुत सारी चीज़ देखने मिलेगी। सबसे पहली बात तो माँ कामाख्या का दूल्हा बना है। इस बार किन्नर अखाड़े में माँ कामाख्या की योनि की प्रतिमा बनी हुई है, जिसमें जो भी श्रद्धालुगण यहाँ पधार रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और उनको माँ कामाख्या का भी आशीर्वाद मिले और उनके जीवन के सारे दर्द संकट शिवरात्रि में दूर ना चलो बोले सब अभी एक साथ ले लो भैया, एक ही साथ ले लो।
ભીડ ના કરશો. આવા જવાની જગ્યા રાખો યાર, મહેરબાની કરો. હવે આરતી થઈ ગઈ છે, મહેરબાની કરો ગેટ આગળ કોઈ ભીડ ના કરશો. દર્શન કરી લો, દર્શન કરી લો. મહેરબાની કરીને રસ્તામાં ભીડ ના કરશો. બધા આવી ગયા. પલક નામગીરી, તમારું નામ જ છે પલક માતાજી. આવી જાઓ, ત્યાં આગળ આવી જાઓ. એ બધું ઓર્ડર મૂકી દો. ગિરનારી માતાજીનો હુકમ છે. આવી જાઓ, અહીં આગળ મૂકી દો. મીનો નામગીરીનો ધૂનો છે, ત્યાં આગળ બધા શિષ્ય આવી જાઓ.